everyone. Good morning. I'm Ruchira Darda, Director of Lokpat Pathshala, and I'm a relationship coach. I've been working with families and children to help them identify their personalities since a couple of years now. But more than anything else I do, I am a parent. When I was a young girl, I thought this was any job which was going to be able to be done very easily. Everybody becomes a parent, so how hard could it be? But when I actually had my children, is when I realized this is a tough task at hand. It is only then that it occurred to me that I was not getting it right. There was something that was missing. And that search for that answer, the search for overcoming the guilt and doubt all the time, actually made me look for answers. And the answers that I found in identifying your child's personality, I think was the biggest relief that I ever received. The biggest parenting mistake we do is we parent our child according to who we are. Just message on the chat if you agree with me. We all decide how we are going to parent our children by our experiences of life. We define that by our style. So if I am a determined personality, I am a person who sets goals, I am the person who's a planner, I expect my child to be like that. And then I think that I have to spend my entire parenting experience in training my child to become a good planner. But unfortunately, our child is different from us. And we don't get that realization until we have created some amount of damage to that child's personality and to our relationship with him. So tell me, if you have it already down right, you have figured out what your child personality is like, are you being able to parent them the way they would like it? If you have answers, leave it in the comment box below. But here's what I have realized from all my experiences working with parents. They always ask me, how can I change my child's personality? Can I make him more driven? Can I make him more goal-oriented? How will he do well in college? He will never do well in school. What will happen at work? How will it all work out? But the thing is, you can never change your child's personality, and you shouldn't. Your child is unique in himself. He's special in his own way. Okay? Now, what happens is we don't have answers. We just go ahead, we keep doing the trial and error in our parenting, and that never helps us to reach anywhere. I think most women suffer from self-doubt and guilt all the time because their parenting journeys don't confirm whether they're doing it right or not. And the best part is, each of your children are going to be different. So they are never going to be identical. And then that one style of parenting doesn't work for all the children. They all are different. So I have two boys, and my two boys are distinctly different. If you saw them in a crowd, you can just, even without knowing their personalities, tell them apart. And we all had that, right? Like as a young girl, my sister had separate rules than what were applied to me. But it was simply because I was a completely different person. So now, what are those rules that should fall for your children? Who is your child? How can you make your parenting more effective? So the first thing is to identify who my child is. What does he like? How does he react? What works for him? So I'm going to break it down into 4 little bits for you. So अगर आपका बच्चा fun loving है, bubbly, cheerful, all the time, excited, comes up with all these fabulous ideas, मम्मी अब ये करेंगे, आज मैंने ये बनाया, outgoing, has many friends, always life of a party, you will feel for this child कि ये एक project लेता है, कभी खत्म नहीं करता है. Keeps jumping into different things, keeps wanting to experiment. So you feel he's never going to complete a task. You keep pushing him कि
ये काम लिया है, ये खत्म करो, ये क्लास में एनरोल किया है, इसको फिनिश ही करना पड़ेगा. But the type 1 child doesn't work like that. He is an explorer. He's collecting his life experiences by just floating all over the place. So if you have this type of a child in your hands, you need to be his audience. You need to praise him for who he is. You need to accept that energy that he has. He has so much energy. You need to love that. So this child needs to feel that his parents can feel his energy, and they love that about him. So what you can do is start your feedback to this child with a little praise. Okay, so tell this child, oh, this is a fabulous idea, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये कैसे होगा, आपने कैसे सोचा? Because these children are very creative, they are imaginative, they are like, they float. Okay, so don't restrict their creativity just because their style is different from what you want them to do. So start with the praise and then add a gentle feedback. Okay, so the gentle feedback comes in the way of, this is a great idea, but what do you think about this? Let's try this way, and then will you try it my way? The minute this child feels that acceptance of his idea, he will surely be up for trying something new, because he's an explorer. He loves new ideas. The other type of child is a determined one. Okay, these are the natural leaders. They are going to go out and get their goals sorted. Okay, so these are the kind of children you don't really need to worry about. Most often, these are the children you will have that who are self-motivated. They will go to school and look for becoming the head girl or the monitors and prefects. They will ask for leadership positions. So these type of children but tend to look very bossy to their parents and siblings, because they're very determined. They know what they want and they know how to ask for it. So अगर कभी आप अपने इस टाइप के बच्चे के साथ ड्राइव पे गए हैं एंड आपने उनको कार सीट में बांध दिया, 3 घंटे की ड्राइव है, इफ दे आर नॉट एंजॉइंग इट, वो 3 घंटे तक रोते रहेंगे. दे विल नॉट, चुप नहीं होंगे, क्योंकि दे नो हाउ टू गेट देयर वे. अंटिल यू टेक देम आउट ऑफ दैट सीट, वो चुप नहीं होने वाला है. So these are the kind of children, determined children are, they will get their way by hook or crook. Okay, जो अपन इंडिया में वर्ड यूज करते हैं जुगाड़ू बच्चे, तो ये जुगाड़ू बच्चे होते हैं, कैसे भी करके अपना काम करवा लेंगे. इनका ये जो स्टाइल है समटाइम्स ओवरपावरिंग लगता है. लोगों को लगता है ये बहुत ब्लंट है, कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, डायरेक्ट है. So that tends to be a little overwhelming even in the parenting, when you are trying to give feedback or you're trying to give instructions to this type of a child. This child is actually giving you feedback and arguing. So just to share an incident, like there was a mother in a party and she had 3 children. One child fun-loving, outgoing, the second determined child, and the third peace-loving child. So the determined child, the mother said, we have to go now. You guys are not behaving properly. I want you all to leave this party and come home right now. So the fun-loving child will try to like make mom feel the energy. He's like, oh mama, don't worry, we'll be better. Look, it's so much fun. What you're saying is absolutely right. I'm not going to do it now. And he'll convince his mother. The mother feels, okay, chalo, he's taken the feedback well. The peace-loving child will be deeply hurt. He has disappointed his mother, and she's like not happy with him. He'll go in this corner, become really quiet. But the demanding child, the determined child, is going to be like, you want to go home? Okay, let's go right now. So that's the catch-22 situation for the mother, who really didn't want to go. She just wanted to threaten her children. But this child is not going to let her go down easy. How do you motivate this type of a child? What you need to do is you need to be mindful that you give them space to be leaders. Now, how can you do that? You have to let them take their decisions. Let them try out their ideas. Sometimes
we tend to instruct our children thinking we are the parents and we have to tell them what to do. You have to tell them what to do in certain cases only. So determined children don't need someone to say aisa aisa aisa. They are very independent. Okay, they like to make their own decisions. So just give them the thing that has to be done. Give them the task. Today I need you to lay the table, and leave it to them. They will take the decisions. They are absolutely independent. They will get it done. That's something you can be mindful of when you're parenting a determined child. Then there are the serious children. Okay, absolutely serious. From childhood ही बहुत mature रहते हैं. So इन बच्चों की हम बोलते हैं कि like एकदम grown up के जैसे है. They are never playful. They never indulge in nonsense conversations. बल्कि जो बच्चे playful रहते हैं, serious children don't like those children also. So you'll always see even as teenagers ये अलग रहेंगे. They'll be on their own. And इनके लिए हम हमेशा उनको पुश करते हैं कि आप आउटगोइंग बनो, दूसरों से मिलो, बाहर जाओ. बट ये बच्चे इंट्रोवर्ट्स होते हैं. ये ज़्यादा अपने आप में रहते हैं. ये इंटेलेक्चुअल्स होते हैं. ये हर चीज़ को एनालाइज करते रहते हैं. हर चीज़ के बारे में बहुत सोच डालते हैं. ऐसे नहीं कुछ भी कर लेते हैं. जैसे जो हमारा डिटरमाइंड चाइल्ड है, उसको अगर कुछ आइडिया आया, वो इंस्टेंटली वो आइडिया एग्जीक्यूट कर लेगा. ओके, ये बच्चा, सीरियस बच्चा, हर आइडिया के पीछे बहुत सोच डालेगा. ओके, इतनी सोच डालेगा कि उसको उसमें टाइम लगता है आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए. वो प्लानर्स रहते हैं. दे वॉन्ट टाइम टू थिंक अबाउट देयर प्लान. सिर्फ ऐसे ही नहीं कर लेंगे कोई भी चीज़. इनके लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं यूजुअली इज परफेक्शनिस्ट. ओके, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए. So for a parent, sometimes it's an overwhelming experience that in the sense of they will be very very particular. Okay, उनका काम उसी तरीके से होना चाहिए. उनका काम में कोई जैसे आपने उनकी चीज़ें हिला दी, उनका कबर्ड जमा दिया, they will be extremely disturbed. Okay, they are very particular about how their work should happen, and usually this becomes a point of conflict between parents and children. Okay, so these type of children need to be given their space. You need to understand their pace of work. Okay, they don't work fast. They're going to take time because they're going to do it to perfection. जब तक वो चीज़ उनके स्टैंडर्ड से नहीं होगी, वो नहीं करेंगे. बहुत सेंसिटिव बच्चे रहते हैं. सो यू कैन टेल, आपका अगर ये सीरियस बच्चा है तो हर बात को बहुत ज़्यादा फील करते हैं. सो ऐसे बच्चों को आपको बहुत पेशेंस से डील करना पड़ता है. जैसे सिर्फ कैजुअली आप नहीं बोल सकते कि उनको लॉजिक दीजिए. को जो भी बात है उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, वो लॉजिक उनको समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो जैसे कि आपको उनसे अगर रूम साफ करवाना है, so you can't just say go and clean your room. They may not do it because they're going to think about it, or they will do it at their own time. You need to let them know कि you need to clean your room because जो सामान बिखरा हुआ है उससे मुझे पाँव में लग जाएगी. अगर आप उनको लॉजिक देंगे तो वो बच्चे काम करेंगे. दे ओनली वर्क ऑन लॉजिक. इन बच्चों से आप कैजुअल कॉन्वर्जेशन भी नहीं कर सकते. दे आर नॉट गुड विद कैजुअल कॉन्वर्जेशन. सो दे लाइक सीरियस conversations. They like parents who are organized and who have definite ideas कि ऐसे ऐसे करना है. तो इन बच्चों से डील करने के लिए आप cheerful होके उनको encourage नहीं कर सकते. उनको हमें बहुत gently, बहुत particularly encourage करना पड़ता है. And the fourth kind of children are the sensitive children. Okay, these are the peace-loving kids who are absolutely calm. उनको लाइफ में कोई जल्दी नहीं है. They are in no rush to take over life. So usually as a parent you will feel क्या तुम इतने lazy हो, तुम्हारा क्या होगा लाइफ में, तुम कुछ नहीं करोगे. आप उनको अगर कोई काम दे के जाएंगे and you come back in 15 minutes, वो काम ऐसा ही पड़ा रहेगा क्योंकि वो काम वो अपने पेस से करने वाले हैं.
आराम से अपने स्टाइल में धीरे धीरे। इन बच्चों को आप पुश नहीं कर सकते कि जल्दी करो। ये उनकी पर्सनालिटी का टाइप नहीं है। उनकी पर्सनालिटी का टाइप है कि वो एकदम पीसफुली हर चीज़ करते हैं। सो इनके लिए आपको रिलैक्स डेडलाइंस डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम डिटरमाइन बच्चों को डेडलाइन देते हैं कि आप 5 days में ये काम कर लेना, एक प्रोजेक्ट है, दे विल डू इट इन 5 days, दे विल बी वेरी गुड एट इट। बट sensitive child, that same project might take him 7 or 8 days. So just be mindful of it. हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को पुश करते हैं कि दूसरे के जैसे बनो। हमारे नेबर का बच्चा कर लेता है, ये क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसका स्टाइल अलग है। So once you recognize what is the style of your child, आपके स्टाइल, बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, then you can guide that child very easily. मोस्ट ऑफन ये सेंसिटिव बच्चों के लिए हम लोग उनका ईगो हर्ट कर देते हैं। ओके, दे जस्ट वांट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स, दे डोंट वांट टू फेस हार्श वर्ड्स। ओके, एंड मोस्ट ऑफन बिकॉज दीज children are little slower than the other kids, parents, teachers, faculty will usually push them and say jaldi karo, tum only you are left behind, you never get tasks done, and we try to change that child's personality. Now the best question every parent asks is, how do I change my child's personality? आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी नहीं चेंज कर सकते। हम जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, वी आर कॉन्शियस कि हम उनके बाल का कलर नहीं डाई करेंगे, उनको लेंसेज नहीं लगाएंगे, बट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द आइडिया कि हम उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं चेंज करेंगे। हम ट्राई करते हैं कि हम उनकी इंडिविजुअलिटी चेंज कर दें, ये मेरे जैसा बन जाए या ये उसके जैसा बन जाए, उनका बच्चा तो ये कर पाता है। बट अगर हम अपने बच्चे को चेंज करने वाले हैं तो उसके इंडिविजुअल नीड्स का क्या होगा? हम बच्चों में जो प्रेशर डालते हैं कि आप दूसरे के जैसे क्वालिटीज अब्जॉर्ब करिए, वो उनकी पर्सनैलिटी से अगर मैच नहीं होता है वो नहीं कर पाएंगे। एंड अगर वो क्वालिटीज नहीं अब्जॉर्ब कर सकते हैं नेचुरली और उन्होंने फोर्सफुली अब्जॉर्ब की, सो दोज चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी वेरी कंफ्यूज्ड अडल्ट्स, बिकॉज उनको उनकी पर्सनैलिटी का रियलाइजेशन ही नहीं है, फील ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। सो जो लोग सर्च पे निकलते हैं ना, हु एम आई, कौन हूँ मैं, ढूंढने निकलते हैं दुनिया में कि मैं कौन हूँ, these are the kind of people who got parented in the wrong way to be someone else, and then they lost their identity in their quest. So in that, then they'll go out and look for answers, and that search for answers makes them absolutely incomplete. Now everybody tries to get their parenting right, but हम human हैं, so we are going to make our mistakes. Okay, so one day you will apply all the knowledge and the other day you will react the way you do, because you are also an individual who has their certain way of reacting. Now for each child you have to keep controlling your reactions or exposing them in different ways, तो वो गलतियां तो होने ही वाली हैं. The best thing that I would like you to implement in your life is implement a feedback system with your children. बच्चों को naturally मालूम है कि उनको क्या चाहिए, but वो because they are smaller people अपने parents से डरते हैं और express नहीं कर पाते हैं. So अगर आप वो एक relationship बना लेते हैं अपने बच्चों के साथ कि उनकी क्या need है, that's going to be the best channel for you. So these are my few questions for you to ask your children at night at bedtime. So ask them, what was the one thing that mommy did today that you really liked? Now, if you're dealing with teenagers, you can always make this a little more formative. The child will give you that mama did this, I really liked it, I really enjoyed it. So you know what worked well during the day. Now, the second thing is, ask the child, what would you like mama to do differently? Okay? When you ask the child, what would you like mama to do differently, don't ask, आज ममा ने क्या गलत किया, बिकॉज वो बच्चे के माइंड में फिट हो जाएगा, मम्मी गलती करती है मेरे साथ, तो वो नहीं करना अपने को. वी आर गोइंग टू आस्क देम, व्हाट वुड यू लाइक ममा टू डू डिफरेंटली, ममा क्या चीज़ अलग तरीके से कर सकती है.
If you let the child speak his heart out, the child will give you feedback कि मैंने जब मेरा मैथ्स का होमवर्क नहीं किया, आपने मेरे पे शाउट किया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, आप मुझे अलग से बोल सकते थे, तब उस रूम में बहुत सारे लोग थे, मुझे वो पसंद नहीं आया. जब बच्चा आपको ये फीडबैक देता है, उसे कहीं पे नोट डाउन करिए. The reason I'm asking you to note it down because the child feels कि वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट था मम्मी के लिए. अगले दिन वो फीडबैक को इम्प्लीमेंट करिए. सो अगर आपके चाइल्ड ने बोला कि आपको मुझे कुछ बोलना है तो मुझे प्राइवेटली बोलिए. सो गो टू द अदर रूम विद योर चाइल्ड एंड से बिकॉज यू गेव मी द फीडबैक येस्टरडे कि मुझे आपको अकेले में बात करनी है, इसलिए आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आज जो आपने ऐसा किया टेबल पे वो ठीक नहीं था, एंड I really appreciate your feedback. I hope you will take care that next time ऐसी बात नहीं हो. You will see that it works miracles for your children because you have given them the respect and you have listened to what they want to say. Okay, this is something that works beautifully for my children. In fact, ये knowledge आप अपने बच्चों से share करिए क्योंकि मेरे बच्चों ने इसको इतने अच्छे से अब्जॉर्व कर लिया. मोस्ट ऑफन जब मैं गलती करने वाली हूँ वो मुझे करेक्ट कर देते हैं कि ममा मैं टाइप 1 पर्सनैलिटी हूँ, मुझे क्रिएटिव रहने दो. तो अगर मैं उनको पुश कर रही हूँ कि नो फिनिश दिस वर्क, they will be the ones who will correct me कि let us do what we're doing, we are not doing it wrong. So it's become a beautiful communication. They will hold back my reactions. They know कि mama को ये trigger हो रहा है, mama needs this, so they will break up the day plan. They will help me कि कैसे हम प्लानर बनाएं कि उनके भी satisfaction हो और ममा की भी satisfaction हो जाए. So that's something you can implement. It's very easy science. It's very easy. Just listen to your children. बच्चों को बचपन से ही वो नॉलेज है कि वो कैसे है, बट हम उन्हें कंफ्यूज करते रहते हैं. तो आपका जो टाइप 1 चाइल्ड है जो फन लविंग है वो आपको बहुत ज़्यादा हग करेगा, किस करेगा. हम उसे दूर कर देते हैं कि कितना हग करती हो, कितना किस करती हो, ये उसकी नीड है, वो अपनी टंकी भर रहा है. सो ऐसे ही हर चाइल्ड के एक एक सिग्नल्स रहते हैं. अगर आप वो सिग्नल्स रीड करें एंड यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द चाइल्ड इन हिज लैंग्वेज, then you're going to be successful at parenting. You won't have to face any guilt, doubt or conflict at home. Thank you for all these comments. I'm reading something very small but of great importance. Thank you for sharing that. Okay, great. We have a lot of compliments here saying very interesting. कुछ बच्चे अपनी दुनिया में होते हैं. Those are probably type 3s and 4s. So they are sensitive children and the serious children. You can be mindful कि वो अपने दुनिया में नहीं है, वो सोच में है क्योंकि उनकी सोच अलग है. वो अलग तरीके से लाइफ को देखते हैं. वो इंट्रोवर्ट रहते हैं तो बहुत लोगों में नहीं रहते, उनको नहीं पसंद है शोर शराबा, बहुत ज़्यादा अटेंशन. वो कभी चूज नहीं करेंगे कि पार्टी में जाके बीच में बैठे. दे विल ऑलवेज चूज द कॉर्नर्स. दे विल लाइक टू रीड मोर बिकॉज सीरियस बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ पे, हर एक टॉपिक पे. तो आप देखेंगे आगे जाके ये एजुकेटर्स बनते हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बिकॉज हर चीज़ जिसमें सोच लगती है वो उनको अट्रैक्ट करती है. ऐसे ही सेंसिटिव बच्चे बहुत काम एंड पीस लविंग रहते हैं. वो कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुसना चाहते, इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते लोगों में रहना. They like to be on their own, they like to be at their own pace. So this is something you can acknowledge about your children that मोस्ट ऑफन हम बड़े होके ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बने कि हम अपनी खुद की कंपनी इंजॉय कर सके या हम अकेले रह सकें. बहुत लोगों को उसकी तकलीफ भी होती है. लेकिन टाइप 4 बर्थ से ही जो सेंसिटिव बच्चे हैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बच्चे बोलते हैं हम उनको, हमको सेंट्स बोलते हैं. जैसे हर एक पेरेंट के लिए ये सेंट चिल्ड्रन बोलते हैं क्योंकि ये कोई भी बात मान लेते हैं, ईजिली कुछ भी कर लेते हैं, सिर्फ बहुत फास्ट पेस नहीं रहते, अपना टाइम लेते हैं कुछ भी काम करने के लिए. सो दीज चिल्ड्रन
are special in a very, very beautiful way. You need to understand them. That's all. Thank you for all these lovely comments. If you all have any further questions, you can leave it in the comments below and I will write back. And you can even email Lokmat Pathshala and they will forward the queries to me. Thank you, Ujjwala. I'm glad you enjoyed it. All right, I'll see you guys. Happy parenting. Leave your concerns, any afterthoughts later as well. We will write back to you and have a lovely day. I have a question. Some kids are not very expressive but very comfortable, talkative, playful among their own people. That child is probably the serious child. He likes to only associate with his kind of people. They will not associate with anybody. Okay, उनको उनके जैसे ही लोग पसंद है, intellectuals, and they are not very expressive because वो हर बात सोच समझ के बोलते हैं. ऐसे ही लूजली नहीं बोल देंगे कुछ भी, जो उनके मन में आया नहीं बता देंगे, बहुत सोच डालेंगे, इसलिए वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं. वो खुद को एक्सप्रेस करने में इतनी सोच डालते हैं कि व्हेन आप उनको एकदम से कुछ बोल देते हो गुस्से में या कोई कमेंट कर देता है उनके बारे में, तो वो उनको बहुत फील हो जाता है. दे डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने बिना सोचे कमेंट किया है, ये मेरी तरह नहीं सोचते. दे फील सोच समझ के मेरी मम्मा ने मुझे ऐसा बोला है या मेरे पापा ने मेरे से ऐसा रिएक्ट किया है, सो दे टेक इट टू देयर हार्ट. These kids are not expressive because they are thinking through. Okay, you can encourage them to be a little less sensitive. They are also very pessimistic in a way because they think the negative first. तो उनको जब बात फील हो जाती है, उन्होंने पहले उस बात का नेगेटिव पकड़ लिया, बाद में सोचेंगे and they'll come to positive. So you can help these children to take things a little more casually by just small feedbacks. कि यू नो आई डिडंट मीन इट लाइक दिस, मैं तो ऐसी बोल दी थी. टॉक टू देम वेरी सेंसिटिवली, एंड व्हेन दीस चिल्ड्रन आर डाउन, डोंट ट्राई टू चीयर देम अप लाइक चलो मूवी चलते हैं या डिनर लेके जाता हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस चिल्ड्रन. देयर वे ऑफ रिकवरी इज नॉट चीयर, सो दे नीड टाइम टू रिकवर आउट ऑफ दैट पेन. मोस्ट ऑफन हम उसके ऊपर डबल कर देते हैं क्योंकि यू आर ट्राइंग टू चीयर देम. हम चलो आइसक्रीम खिला देंगे, and these children will not accept that very well. They feel their pain is very important, so give them time to heal on their own. Thank you everybody for the wonderful comments, and I'm signing off now. If you have any questions, leave it on this page or you can write to Lokmat Pathshala and I will get back to you. Thank you.